सभी फैन है, ओके, विच इज गुड टू हियर। सभी फैन है तो हेलो नेहा, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। So we'll just start. Let's just wait for another minute for the other people to join in. I do not see any chat on YouTube yet. So people on YouTube, just confirm once. Is everything okay? Am I clearly audible and visible to you? एक बार मुझे confirm कर दीजिए. After that we are going to start. सर जब से आपको ज्वाइन किया है आप मेरे ऑल टाइम के सबसे बेस्ट टीचर बन गए। अरे यार मतलब दैट्स अ बिग बिग कॉम्प्लीमेंट, ऑनेस्टली very very big compliment for me. I'll always keep it take it as a screenshot, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ एक इसका, ताकि इसको रख पाऊँ, फिर बाद में भी ले पाऊंगा वो तो। Yes, so we'll just start. I'm not getting anything from the YouTube yet, so एक बार कंफर्म कर लेते हैं YouTube पे सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है। Okay, just got a message from Ayushi Sharma. Hi, good evening Ayushi. Am I clearly audible to you Ayushi and visible? एक बार कंफर्म कर दीजिए, उसके बाद विल स्टार्ट। सो लुक्स लाइक लेस पीपल आर देयर टुडे बिकॉज ऑफ आईपीएल, सो इट इज गोइंग ऑन। तो सबको लग रहा होगा कि चलो ठीक है, पहले आज आईपीएल की एक बार पूरी हो जाए, है ना, एक मैच, वो देखने के बाद शुरू करेंगे। दैट माइट बी द रीजन। चलिए जी, सो आई थिंक वी कैन स्टार्ट नाउ। हेलो तनु सिंह, हेलो। सो आई सी नाउ 2-3 पीपल देयर। हाय सिद्धार्थ, विधि, सोनी, शांतनु, एवरीवन। सो ठीक है जी, अब मेरे ख्याल से वी हैव एनफ नंबर ऑफ पीपल, वी कैन स्टार्ट विद इट। सो फर्स्ट the main thing that I always talk about, that is about MAH CET course that we have just started. ठीक है, it's a 3-month course basically. That does not mean that we are saying exam would be after 3 months, but if exam is announced before that, of course we'll increase the frequency उसके हिसाब से, but this is the final lap you can say that we are taking towards this exam. So this is the only exam for this calendar year which is left. So this might be the last attempt for many of you. So this is the course that we are starting with. If any one of you want to take it seriously, I mean the last attempt of yours. And also for all the people who are appearing for CAT 2021, right? Score 99 plus is the course that we have just launched. A few classes have been there on this. So the enrollments are still on, of course, because in this online scenario, you know that even if some classes have gone, at least you get a recorded video of those, तो आप आराम से देख पाते हैं। So Tanu Singh is saying ऐप पे ओपन नहीं हो रहा था। Are you talking about that course तनु सिंह जो ओपन नहीं हो रहा था, और दिस क्लास यू आर टॉकिंग अबाउट? हाय सचिन, सौरभ कह रहे प्रिडिक्शन कर दो आईपीएल हु विल विन। अरे बाप रे, थैंक यू वेरी मच नेहा, गुड इवनिंग आकाश। ये तो कुछ ज्यादा हो जाएगा सौरभ, ऐसे कैसे प्रिडिक्शन कर दूं, इट डजंट मेक एनी सेंस, ऐसे कुछ भी बोल दूं तो। Anyways, first of all about this course that I'm talking about CAT 2021. So the course will cater to CAT as well as the other MBA exams, plus revision classes would be there, day-wise study plan is there, live classes. So all live classes would be there, which are interactive, of course. So you have a green card also along with that. In the green card, basically, you can write all the mock tests and sectional tests. 10,000 plus practice questions, GD, VAT, PI, GK. So basically everything would be covered under this. So for all MBA entrance examinations, it is not only about CAT. जिसमें जो भी आता है वो सब कुछ है। So Tanu Singh, I think you might have faced this problem because I still see some people on the app, right? They are chatting there as well. So कुछ मेरे ख्याल से आपके एंड पे कोई इशू रह गया मुझे लगता है, या कोई टेक्निकल ग्लिच रहा होगा, आई कांट से, बट एनीवेज यू आर ऑन यूट्यूब और ऑन ऐप, डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, सो डोंट वरी अबाउट दिस। ओके, चलिए जी, सो दिस आई ऑलवेज आस्क यू, प्लीज लाइक द सेशंस इफ यू एक्चुअली फील दैट द सेशंस आर गोइंग गुड and you are getting benefited out of these, of course. And I am starting another series on Shakuntala Devi puzzles and George Summers puzzles. I hope you all would be knowing, मैं हर क्लास में बताता भी हूँ। From this Monday I am starting that series. That series would be only on the app. The timings would be there available on the app itself. So वहां से हम लोग वो सीरीज शुरू कर रहे हैं। So I request all of you to go to the app. You will find that series over there. So LRDI को प्रिपेयर करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो हम लोग वहां से शुरू कर रहे हैं। That is the point. So please go to that, right? ग्रेडअप इंट्रोड्यूस करो, मैं ड्रीम 11 पे टीम बना लेता हूँ। ठीक है, मैं इंट्रोड्यूस कर ही रहा हूँ तब तक।
and please comment on these sessions, whatever doubts you have, you can always comment about this or anything that you actually want from me कि चलो ठीक है ये वाली सीरीज कर दीजिए या ये पढ़ा दीजिए. So just comment on this, and if you share with more and more people, the sessions become more interactive then. And if you subscribe, of course you'll get to know about all the details whatever we are doing. कौन कौन सी सीरीज आ रही है, कौन सी नहीं, मेरी कितनी आ रही है और किसी सर की कितनी आ रही है, उन सब का आपको आइडिया लगता रहता है. ठीक है जी. तो शुरू करते हैं विद द क्वेश्चन दैट आई गेव यू इन द लास्ट क्लास एज अ होमवर्क. दिस वाज द क्वेश्चन. सो आई टोल्ड यू कि पहले हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. सो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई गेव यू एज अ होमवर्क इन द लास्ट क्लास, इफ यू रिमेंबर गाइस. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन, बट एनीवन विद द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? डू यू रिमेंबर? दिस वाज द क्वेश्चन आई गेव यू इन द होमवर्क इन द लास्ट क्लास. एनीवन विद द आंसर? Debarti says 728 आया. That's great, Debarti. Anyone else? People on YouTube today, I see some new people on YouTube. Possibly they would not have seen these questions. And for all the new people as well, please, if you like the sessions, please press the like button. That is extremely important for me. Do that. Yes. देवर्ती के अलावा एनीवन एल्स हु ट्राइड टू आंसर दिस क्वेश्चन? किसी ने करने की कोशिश की हो? हर्षा सेज आईपीएल टुमारो मैच, हु विल विन? आई डोंट इवन नो हुज मैच इज देयर टुमारो. हर्षा, हाउ कैन आई आंसर दैट? इतना नॉलेज नहीं है मेरे को. चलिए जी, सो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग दिस. सो देयर आर टू वेज ऑफ एक्चुअली डूइंग दिस क्वेश्चन. तो मैं एक जनरल तरीके से भी बात करूंगा और फिर एक जो बढ़िया तरीका जो हम लोग हमेशा डिस्कस करते आए हैं उसके बारे में बात करूंगा. सो आकाश ऑल्सो गॉट 728. लेट अस सी व्हाट इज द राइट वे ऑफ आंसरिंग सच ए क्वेश्चन. तो उसके बारे में बात करते हैं. द क्वेश्चन इज सेइंग दैट यूजिंग 0, 7 and 8 हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स बिलो 1 million कैन बी फॉर्म्ड. हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स बिलो 1 million कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 0, 7 and 8. सो सौरभ गॉट 486. सौरभ, आई इवन आल्सो गॉट टू नो कि आपने गलती क्या की है, वो भी मुझे समझ में आ गया. ठीक है. अरविंद इज सेइंग डिड नॉट ट्राई. नॉट ए प्रॉब्लम, कोई बात नहीं अरविंद. सो लेट अस डू इट हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट एग्जैक्टली इज 1 million? होता क्या है 1 million? 1 million इज 10 raised to the power 6. 10 raised to the power 6 का मतलब ये है 1 के आगे 6 zeros. So you can say it is the smallest number of 7 digits. The question says how many numbers below this. अगर smallest number of 7 digits से below जाना है, so can I say that basically the question is saying maximum number of digits in the number can be 6. It can be a maximum 6 digit number. I hope that is correct. ये smallest 7 digit number है. अगर इससे below चाहिए, इसका मतलब it can have a maximum of 6 digits. मिनिमम ऑफ कितना भी हो सकता है, मैक्सिमम 6 होना चाहिए. एंड ऑफ कोर्स यू कैन यूज ओनली 3 digits 0, 7 and 8. तो ये अपने आप ही बताता है रिपीटिशन इज अलाउड. अगर रिपीटिशन अलाउड ना, हाउ वुड आई बी एबल टू मेक 6 digit नंबर्स? वो तो पॉसिबल ही नहीं है फिर, राइट? सो हाउ मेनी 6 digit नंबर्स कैन आई मेक? लेट अस चेक दैट. इफ आई मेक 6 digit नंबर्स, ऑफ कोर्स द फर्स्ट प्लेस कैन नॉट बी 0, इट कैन बी 7 or 8, एंड द नेक्स्ट प्लेस कैन बी 0 or 7 or 8. रिपीटिशन अलाउड है तो तीनों दोबारा लिख सकता हूं. And next place again 3 ways, next place again 3 ways, next place again 3 ways, next place again 3 ways. This gives me 486 numbers. And this is why Saurabh you got 486 as the answer. But this 486 is telling you about only 6 digit numbers. ये सिर्फ 6 digit numbers की बात कर रहा है. Whereas the question is asking you how many natural numbers below 1 million. तो उसमें 6 digit भी आएंगे, 5B, 4B, 3B, 2B, 1B. They all are to be counted. So the next step is how many 5 digit numbers can be formed. The 5 digit numbers that can be formed is the first place can be filled in 2 ways, next in 3 ways, next in 3 ways, next in 3 ways, next in 3 ways. So therefore the answer would be equal to ये आएगा 81 into 2, that is 162. Then we talk about 4 digit numbers. How many 4 digit numbers would be there? Basically एक 3 ही तो कम होगा. So एक और 3 कम हो जाएगा, डिवाइड कर दो 3 से, it will be 54. Then 3 digit numbers में फिर एक और 3 कम होगा, डिवाइड कर दो 3 से, it will be 18. Then 2 digit numbers में एक और 3 कम होगा, डिवाइड कर दो 3 से, that will be equal to 6.
और 1 डिजिट नंबर्स में एक और 3 कम होगा तो 3 से डिवाइड कर दो, दैट विल बी इक्वल टू 2. 2 डिजिट 1 डिजिट के तो 2 ही बनेंगे, एक 2 बनेगा और एक 7 बनेगा और 8 बनेगा. So if I add all of them, it gives me 728. So 728 is the correct answer. I hope all of you got it. Anyone having a doubt now on app or on YouTube? Today we have very less engagement on YouTube. People are not liking this session as well. I see that. Okay, Mohan is saying I did not understand. Not a problem. I'll repeat once again. Sagar zero नहीं ले सकते ना, natural numbers की बात हो रही है, so we can't take zero, right? I repeat Mohan, एक बार फिर repeat करता हूँ. First of all, I am saying 6-digit numbers because below 1 million बनाने हैं. Below 1 million का मतलब ये है below 10 raised to the power 6, which is the smallest 7-digit number. A number which is below the smallest 7-digit number, can I say would be a maximum 6-digit number? तो 6 digit के नंबर कितने बने? I am saying the first place can be filled in 2 ways, क्योंकि 0 तो नहीं ले सकते. Rest all places can be taken in 3 ways because they all can be 078, 078, 078. So इन सबको multiply करो, this gives you 486. Then I talk about 5-digit numbers. What are the 5-digit numbers? The first place can be filled in only 2 ways again. 0 नहीं आ सकता, 7 और 8. The next is 3 तो बन जाएगा 162. Similarly 4-digit numbers. The first can be filled in 2 ways और next फिर 3 बार 3 आ जाएगा अब की बार. Similarly 3-digit numbers. The first is filled in 2 ways. बाकी दोनों में 3 आ जाएगा. 2-digit numbers. First is filled in 2 ways. Next is in 3 ways and the last is only 2 ways. That makes the total as 728. I hope you got it now, Mohan. Soni, you got it. Neha, if there is any problem. So now you must have understood that what is the answer for this. Now I'll talk about the alternate solution that Akash has also written, and let me explain that as well. I am saying I have to make a maximum of 6-digit numbers. I have to make a maximum of 6-digit numbers. Soni, 2 and 3 नहीं ले रहे हम लोग. 2 is the number of ways in which this place can be filled. क्योंकि मैं यहां पे सिर्फ 7 और 8 रख सकता हूं. 2 is the number of ways. Similarly, this can be filled in 3 ways. 0, 7 और 8. तो 2 और 3 number of ways हैं. 2 and 3 are not the digits. These are the number of ways in which these places can be filled. That is what I am saying. हाँ जी, the other solution is a maximum of 6-digit numbers are to be formed. The last place can be filled in 3 ways. उसके पहले वाला 3 ways, उसके पहले वाला 3 ways, उसके पहले भी 3 ways, उसके पहले भी 3 ways. We are saying first one can be filled in 2 ways because अगर 0 हो गया तो नंबर क्या हो जाएगा 0 होने से? It will be a 5-digit numbers. But I have to count 5-digit numbers as well. अगर दोनों 0 हो गए तो क्या? It will become a 4-digit number. So that means automatically it will count 4-digit numbers as well. So can I say अगर मैं first वाले के भी 3 ways कर दूं, this makes it 3 raised to the power 6. So now it is actually calculating all the numbers which are whether 6 digits or 5 or 4 or 3 or 2 or 1, because अगर पहला प्लेस पे 0 आ जाएगा it will become a 5-digit number, तो वो अपने आप सब काउंट हो जाएंगे इसमें. If the first 2 will become 0 तो 4-digit नंबर बनेगा, वो भी काउंट हो जाएंगे. First 3 become 0 तो 3-digit बनेगा, वो भी काउंट हो जाएंगे. So it is counting all the numbers, but it is also counting one case when all of them are 0. अब जब सारे 0 हो जाएंगे the number would become 0. And 0 is not allowed. हम तो natural number की बात कर रहे हैं. So that one case has to be ruled out. 3 to the power 6 is 729 minus 1, that is 728 is the correct answer. That is very good सागर. कोई बात नहीं, वो वाली गलती मैं समझ सकता हूं, 0 काउंट हो गया एक्स्ट्रा, बट अगर आपने किया है this is brilliant then if you did it. Very good. Akash also did this. I think Debarti also did the same thing. Debarti got the same answer, 728. Is it clear to everyone? Can I move forward to our today's lecture? This was the question that we had to did from the last class. तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आज की कहानी के बारे में. This is the last session that I am taking on FPC, that is Fundamental Principle of Counting. तो आज भी हम लोगों इसमें क्या बात कर रहे होंगे? Today I am going to talk about what is NCR, what is NPR, ये कहां से आए, क्या है. This is what we are going to discuss today. Ramana is asking why -1. Ramana, actually
When all of them become 0, the number becomes 0. And 0 is not allowed because natural numbers में 0 नहीं आती. तो मैं सबको 0 लेने पे जो नंबर बनेगा इसमें वो भी काउंट हो गया था. That one is subtracted and therefore that one has been taken out from it. ठीक है जी, let us move forward now. Using 1, 2, 3, 4 and 5, exactly how many 2-digit natural numbers can be formed? Let's talk about this now. And I'm very sure about this. In the next 10 minutes, if you actually study it properly, you will get to know what is NCR, what is NPR, what is the difference between them, how are they derived. In 10 मिनट में हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे. मतलब ये मेरा बिलीफ है, ठीक है, unless you prove me wrong, लेकिन मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए ऐसा. So using 1, 2, 3, 4 and 5 exactly once, how many 2-digit numbers can be formed? इसका मेरे ख्याल से आंसर आप सब लोग जानते हैं. दीक्षा आपने छोटी सी मिस्टेक कर दी. I had written exactly once. You had done 5 into 5, जिसमें आपने रिपीट कर दिया. Actually I am saying कि repetition allowed नहीं है. If repetition is not allowed, you will say the number of numbers that can be formed is 5 into 4, that is equal to 20. 5 into 4 is 20. The number of 2-digit numbers that can be formed out of these 5 digits is 5 into 4, that is equal to 20. And how many 3-digit numbers can be formed? If I ask you how many 3-digit numbers can be formed? The number, yes, बहुत सारे लोगों ने एकदम से अजय मैंने देखा अभी, but today surprisingly YouTube पे replies नहीं आ रहे हैं. So सागर, विधि, दीक्षा, सौरभ, नर्मदा, देवर्ती, सोनी, नेहा, सात्विका, सौरभ, everyone answered. All of you answered correctly except सौरभ, आपने ये मिस्टेक की है, आपने भी 5 into 5 लिखा है. ठीक है, हाँ जी. 3-digit numbers की जब बात आ रही है, so all of you are saying 60, that is correct. 5 into 4 into 3, 5 into 4 into 3, that is 20 into 3 60, तो 60 becomes the answer. ठीक है, 60 is the number of numbers that can be formed out of these 5 digits using exactly the once. सबको एक बार यूज करने पे. ठीक है जी. अब मैं बात करता हूं इसके बाद कि अगर मैंने 3 डिजिट के नंबर बनाए, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स हमारे बन गए हैं 60. सो लेट मी जस्ट टॉक अबाउट दिस. तो मैंने कुछ तो मिस्टेक कर दी इसमें. एक सेकेंड, मैं कुछ और सोचना चाह रहा था, कुछ और बताना चाह रहा था और मैंने कुछ और लिख डाला है. 1 2 3 1 2 4 1 2 5, वो रह गए अभी मेरे. ठीक है. हाँ जी, जल्दी जल्दी में लगता कुछ मिस्टेक कर गया मैं. चलो कोई बात नहीं, तो ध्यान से सुनिए. So if I talk about 3-digit numbers that can be made, the answer is equal to 60. ठीक है, What all 60 numbers can I make? तो मैंने कुछ नंबर्स यहां लिखने की कोशिश की है. Actually there would be 60 numbers, but I've written some of the numbers over here. कितने लिखे मैंने? 6 6 6 6 6 6, that is equal to 36 numbers I have written. There are 24 more numbers that can be written, so that means and so on. यहां पे आप ऐसा लिख लो and so on. So these are the 60 number of numbers that can be formed by this. So basically I can say सारे numbers के total जो बनेगा that will be equal to 60. Okay. Now the point is that the point I am trying to make is if you look at all these numbers, ठीक है, look at this first pair of 6 numbers. Look at the first pair of 6 numbers. In all the 6 numbers, the digits used are 1, 2 and 3. Look at all these 6 numbers. The digits used are 1, 2 and 4. Look at all these 3 cases, 6 cases. The digits used are 1, 2 and 5. So can I say with one pair of 3 digits, I can make 6 numbers, that is 3 factorial numbers. आप ये भी बोल सकते हो, एक पेयर से 3 factorial numbers बनते हैं. So किसी एक पेयर से ये 3 बन रहे हैं, किसी एक पेयर से ये 6 बन रहे हैं, किसी एक से ये 6 बन रहे हैं, किसी एक से ये 6 बन रहे हैं, so on and so forth. With every triplet of 3 digits, we are able to make 3 factorial numbers like these. Right? Good evening, Janina. ये समझ रहे हैं आप बात? तो अगर यहां पे आप ध्यान से देखो, तो in the first case, the digits used
In the first case, the digits used are 1, 2, 3. In the second case, the digits used are 1, 2, 4. In the third case, the digits used are 1, 2, 5. Fourth case, the digits used are 2, 3, 4. Similarly, 2, 3, 5. Similarly, 3, 4, 5. Similarly, ऐसे चलता रहेगा. So can I say for every 6 numbers, the triplet of digits is 1. For next 6 numbers, triplet of digits is 1. For the next 6 numbers, the triplet of digits is 1. ऐसे ही आगे चलेगा, ऐसे ही आगे चलेगा, ऐसे ही आगे चलेगा. So अगर total number of numbers 60 है, so कहना है 60 को 6 से डिवाइड कर दो तो total number of triplets जो बनेंगे वो तो 10 बनेंगे ना. Do you agree to this? If the total number of numbers that can be formed is 60, so the total number of triplets that would have made these numbers, those are equal to 10. Correct है ये बात? 60 has been divided by 6. जल्दी बताइए, is this clear to all of you? ये समझ आई है बात आपको कि मैं नंबर बनाता हूं तो नंबर बनते हैं 60, but actually if I look at only triplets which are making these numbers, तो वो ट्रिपलेट कितने बन जाएंगे? Every triplet is giving me 6 numbers, so therefore divided by 6 is giving me 10, right? और वो 6 क्या है? Actually that 6 is 3 factorial. Actually that 6 is 3 factorial. Where from that 3 factorial came? Because the digits are 3. So every time 3 digits are making 3 factorial numbers, तो उसको 3 factorial से divide करने पे ये आ गया. And now comes the beautiful part of it. This 60 is called NPR. In this case, it is called 5P3. And this 10 is called NCR. In this case, it is called 5C3. That is the difference between NPR and NCR. NPR क्या करता है? NPR उनके ऑर्डर को भी अकाउंट में लेके आता है. That counted NPR. NCR क्या करता है? NCR just counts that what are the triplets. It is like अगर आप क्लास में जाओ and I ask you just bring 3 students. If you are bringing any 3 students, अमर अकबर एंथनी, it does not make a difference to me कि वो अमर अकबर एंथनी है कि वो अकबर अमर एंथनी है कि वो एंथनी अमर अकबर. I would every time say यार सेम ही तो बंदे लाया 3. But yes, if I ask you to give 3 prizes, first, second, third prize to 3 students in a class, it makes a difference. Amar is first, Akbar is second, Anthony is third, or Akbar is first, Amar is second, Anthony is third. जहां ये order account में आता है, that is called NPR. और वो NPR solve करने के लिए I do not need anything. I can straight away do this fundamental principle of counting. Why do I need that? मैं सीधा नहीं बोल सकता 5 into 4 into 3 मुझे दे रहा है. ठीक है. द ओनली थिंग इज अगर मुझे एनसीआर निकालना है तो 5 into 4 into 3 में कितने डिजिट्स मैंने चूज किए? 3. सो आई डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, आई गॉट एनसीआर. अगर 4 डिजिट होते आई वुड हैव डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, आई वुड हैव गॉट एनसीआर. अगर 2 होते तो आई वुड हैव डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, आई वुड हैव गॉट एनसीआर. सो एनसीआर कुछ और नहीं है. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपने लगाया, वो जो नंबर आता है उसी को एनपीआर बोलते हैं. यू डिवाइड दैट बाय आर फैक्टोरियल, क्योंकि एक केस कई बार रिपीट हो रहा है. सो वी डिवाइड दैट बाय आर फैक्टोरियल, दैट बिकम्स एनसीआर. फॉर्मूला भी यहीं से डिराइव हो रहा है. अगर आप ध्यान से देखो इसको जरा एक बार, 5 into 4 into 3, अगर मैं इसको ऊपर 2 into 1 से और नीचे भी 2 into 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा ये? Isn't it 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल? और ये 2 फैक्टोरियल क्यों आया? क्योंकि 5 में से 3 टर्म्स तो पहले से लिखी हुई थी, बाकी की 2 ही तो ऐड करनी पड़ी ना. दैट इज 5 minus 3 फैक्टोरियल. दिस इज द फॉर्मूला फॉर 5p3. और जब इसी फॉर्मूले को वी डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, दैट बिकेम्स 5c3. सो देयरफॉर 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 minus 3 फैक्टोरियल, इसी को 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, दैट बिकेम 5c3. दिस इज हाउ वी गेट द आंसर अबाउट इट. जल्दी बताइए, क्या मुझे समझ आया ये एनपीआर एनसीआर क्या होते हैं और उन दोनों में क्या डिफरेंस है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई हैव नेवर यूज्ड एनपीआर इन माय लाइफ, क्योंकि एनपीआर तो होता ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला क्यों लगाऊं मैं? बट हां, आई कैनॉट ऑलवेज डिराइव दिस फॉर्मूला ऑफ एनसीआर, तो इसलिए मैं इसको कभी कभार याद कर लेता हूं कि ओके, एनसीआर इज दिस, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल. ये भी नहीं करना चाहते हो, आपको अच्छी से समझ है तो सीधा कर सकते हो, ये लगाओ एंड डिवाइड बाय द फैक्टोरियल.
सपोज आई टेल यू इन ए क्लास देयर आर 10 स्टूडेंट्स, ठीक है, इन ए क्लास देयर आर 10 स्टूडेंट्स एंड आई आस्क यू ओके सिलेक्ट एनी 3, select 3. When I ask that select 3, that means I am asking you कि भैया मुझे ऑर्डर नहीं चाहिए, who is first, who is second, who is third. It is a case of Amar Akbar Anthony. In what order you are bringing them, it does not make a difference to me. I just need 3 people. You can say first person is selected in 10 ways, second in 9 ways, third in 8 ways. But ये तो fundamental principle of counting है और ये तो उनको ऑर्डर में लगा रहा है. FPC will always put them in order. बट अगर मैं कह रहा हूं कि सिलेक्ट करके लाओ, दैट मींस यू डोंट नीड ऑर्डर, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, दिस इज योर आंसर, दिस इज कॉल्ड 10C3, नथिंग एल्स. इसको सॉल्व करो, यही आएगा 10 into 9 into 8 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल. अगर ये नहीं लिखते तो वो अकेला रह जाता 10 into 9 into 8, दैट वुड हैव बिकम द आंसर. जस्ट सिंपल एज दिस. समझ आई ये बात मेरी? हाँ नरेंद्र, मैं भूल ही गया था दिन में, अब चेंज करी ग्रेडअप वाली शर्ट. अगर ये समझ आ गया तो मैं आपसे एक और क्वेश्चन कराता हूं विच इज फ्रॉम एक्चुअल कैट, ठीक है, एंड यू विल लव दैट क्वेश्चन. बेसिकली यू लव द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, आपको बहुत बढ़िया लगेगा. लेट मी आस्क यू द क्वेश्चन नाउ. द क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी वेज 3 नेचुरल नंबर्स कैन बी चोजन, in how many ways 3 natural numbers can be chosen from first 10 natural numbers. In how many ways 3 natural numbers can be chosen from first 10 natural numbers. और 3 natural numbers के नाम है x, y, z, such that x is less than y, y is less than z. जरा आंसर बताओ फटाफट सोच के. Ramana, therefore only I try to explain everything in Hindi as well as in English, because some people have a problem in English, some people have a problem in Hindi, so I try that everything should be explained in both the languages once. एक बार हिंदी में, एक बार इंग्लिश में, that is. So all of you please try this question. There are 3 natural numbers x, y, z that can be chosen from first 10 natural numbers such that x is less than y, y is less than z. सोच के बताइए, what is the answer? Saurabh says 240, Akash says 10C3, anyone else? I don't see today much answers on YouTube. People are busy watching IPL. Vidhi says 120. Madhurima, Sahil Kumar Kataria, Ayushi Sharma, I'm expecting an answer from you. Saurabh says 120, I guess. Okay. So Debarti also says 120. So this is one of those questions when I actually did it. ये मेरे actual CAT में आया था जिस साल मैं लिख रहा था. I actually did it in a very long method. I thought कि अच्छा ठीक है, z can be 10, then z can be 10, then y can be 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. When y is 9, x can have 8 values. When y is 8, x can have 7 values. 8 plus 7 plus 6 plus 5 plus ऐसा 36 बना, अगली बार 28 बना, फिर 15 बना. Then I added all those numbers and then I got 120 as the answer, because in those days I used to be bad at PNC. ठीक है, नहीं मुझे अच्छे से आता नहीं था. फिर बाद में मैंने समझा, तब मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा. Then I thought these questions are so simple that why do we have to do this much? Can't I straight away say कि 10 natural numbers में से 3 चूज कर लो, बस ये आंसर सिंपल सा है. Because when you choose 3 numbers out of 10, automatically one of them is largest, one of them is smallest, one is in the middle. It's as simple as this. भाई 10 numbers में से कोई भी 3 चूज कर लो, right? एक तो सबसे बड़ा होगा and one would be smallest, one would be in the middle. So whichever is the largest, call it Z. Whichever is smallest, call it X. Whichever is in the middle, call it y. You got your answer. So basically when you choose any 3 numbers out of 10, they all can be straight away put into this in only one way. That is, largest is z, smallest is x, middle one is y. इनको put करके you देख लो तो आपको आंसर मिल जाएगा. That is as simple as this. तो छोटा सा आंसर था 10C3 which is equal to 120. So you all are correct. Anmol, Devarti, Saurabh, Vidhi, Akash, Shikhar, Madhurima,
एवरीवन इज करेक्ट अबाउट दिस. ठीक है, चलिए फिर फटाफट आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक. इन हाउ मेनी वेज 2 डिजिट्स कैन बी चोजन आउट ऑफ 1 2 3 4 5? आंसर दिस. Akash is saying 10. Yes. Anyone else? Vidhi says 60. Okay. Gobind says 3,5. Amrita says 5C2. Okay. Janina says 60. Narinder says 10. Ramana says 10. Debarti says 60. Shivi Gupta is also saying 60. Ayush says 10. So some of you are saying 60, some of you are saying 10. Saurabh 10, Manoj 10, Deepak Gupta is saying 20. Okay. But guys, you have to pay attention to one thing. Satvika says 10. In how many ways 2 digits can be chosen out of 1, 2, 3, 4 and 5? You are just choosing 2 digits. Madhurima says 60, Sony says 5C2. 2 digits आप choose कर रहे हैं. And when you are choosing 2 digits, what matters is the order is not important. In whatever order you take them, you are choosing to. If I say I have chosen 1 and 3, so can 3 and 1 be also applicable then? Would it be a valid case? If 1 and 3 are chosen, 3 and 1 are chosen, they are the same thing. If 2 and 4 are chosen, 4 and 2 are chosen, they are the same thing. So when I am choosing 2 digits, their order does not matter. And when the order does not matter, you answer it as 5C2, which is equal to 10. Out of 5 digits, I am choosing 2 digits, which gives me the answer as 10. I don't know why you got 60 as the answer. You must have made some mistake. But the answer for this question is 10. आप 5 में से 2 चूज कर रहे हैं, which is 10. Gagnesh Puri gets 20, Madhurima 30, Rutuja, Nigam, Anmol. I hope many of you now have got 20 as well, 60 as well. Have you got the mistake? 20 में I can understand what mistake are you doing. You are doing 5 into 4. When you are doing 20, you are making 5 into 4. The first digit can be chosen in 5 ways. The second digit can be chosen in 4 ways. But I told you, when you use fundamental principle of counting, you take order into account. 5 into 4 is putting them in an order. आप उनको order में लगा रहे हैं. That means now you are counting 1 and 2 as well. You are counting 2 and 1 as well. Remember that? We just discussed on the previous screen. ठीक है कि ऐसे में तो ऑर्डर आ जाता है उनका 5 into 4 करने पे. सो यू हैव टू डिवाइड इट बाय 2 फैक्टोरियल टू गेट द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिजिट्स. व्हाट आर दोज कॉम्बिनेशंस? आई हैव रिटन देम हियर. ये देखो, ये लिखे हुए मैंने. आरंट दीज द कॉम्बिनेशंस? ध्यान से देखिए. इफ यू चूज 2 डिजिट्स आउट ऑफ दीज 5, इज देयर एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस दैट कम्स टू योर माइंड? कि नहीं, अच्छा इनके अलावा ये वाले तो आपने छोड़ ही दिए. You think of it. If I'm choosing 2 digits out of 5, should I count 4 2 and 2 4 both? Should I count 2 5 and 5 2 both? Should I count 1 4 and 4 1 both? No. These are the only scenarios which can be done. It's as simple as this. Agreed? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. These are the 10 pairs of 2 digits that can be chosen. Okay? Now my next question. In how many ways 3 digits can be chosen out of 5? Please do that and answer me. In how many ways 3 digits can be chosen out of 5? Nigam, answer will be 20 when the question asks you that from these 5 digits how many 2 digit numbers can be formed. अगर 2 डिजिट के नंबर्स बनाओगे तो 1 2 भी गिना जाएगा, 2 1 भी गिना जाएगा, 1 3 भी गिना जाएगा, 3 1 भी गिना जाएगा, 1 4 and 4 1. ऐसे में यूल आंसर वुड बी 20. अभी के लिए आंसर वुड बी 10. सो आकाश सेज 10, आयुष सेज 15, अमृता 5C3, मनोज 10, देवर्ती 10, विधि 10, नरेंद्र 10, सागर 10, रमना 30. ओके, एनीवन एल्स? व्हाट इज द आंसर इफ आई एम चूजिंग 3 डिजिट्स आउट ऑफ 5? 5 में से 3 चूज करो. कितने वेज हैं? ओके, आयुष सेज 10, सोनी सेज 10, सयान दास इज सेइंग 25. ओके,
Anyone else? Saurabh says 10. Nigam says 10. Madhurima says 9. Okay, let us do this. I have to choose 3 digits out of these 5. Now, Deepak is also saying 10. Let's just talk about this. When you chose out of these 5, these 2, okay, how many are left? 3 are left. When you chose these 2, 3 are left. When you chose these 2, 3 are left. So when you are choosing 3 digits out of 5, can't I straight away say that these are those 3 digits and these are nothing but these are also 10? Because whenever you choose 2, these 3 are left. आपने ये choose की, ये बच गई, ये choose की, ये बच गई, ये choose की, ये बच गई. So these are the total 10 ways in which I can choose 3 digits. These are the total 10 ways in I can choose 2 digits. Can I say choosing? मान लीजिए मैंने आपके सामने ये लिखा हुआ है. These are the 5 digits. ठीक है, what I have done 2 digits on one side, 3 digits on one side. Can you tell me whether I have chosen 2 or 3? Can't I say whenever I choose 2 automatically 3 are chosen? Or can't I say whenever I choose 3 automatically 2 are chosen? Because basically you are just making groups of 2 and 3. So when you choose 2, 3 are left. When you choose 3, 2 are left. So that is one or the same thing actually. 2 भी correct है और 3 भी correct है, and therefore only we say that when you choose 2 out of 5, it is as good as when you choose 3 out of 5, because when you choose 2 on one side, automatically 3 are left on the other side. And there from this formula came that NCR and NCN minus R are the same. The reason is when R are put on one side, N minus R are automatically put on the other side. So they are the same. The number of ways you choose 2 digits, each of these ways is actually producing a case of choosing 3 digits as well. You choose 2, 3 are produced on the other side. तो आप 2 choose करो या 3 choose करो, that is one or the same thing. Therefore we are saying 5C2 or 5C3 are the same thing, and therefore we say NCR and NCN minus R are the same thing. So I hope you got the point that what exactly is NCR, what exactly is NPR, what is NCR is equal to NCN minus R. ऐसा क्यों होता है? Fundamental principle of counting order को account में लेता है. These are some of the few important points that I wanted to discuss in today's class. I hope you would have understood these. And there is a question for you now as a home assignment. अगर ये आपको समझ आ गया है तो मैं उस पे आता हूँ. I'll show you the home assignment which you have to do at your home. And all the people on YouTube, they can just comment on the comment box about the answer of that question. Okay, I'll talk about that. So you have to do this question. All of you have to do this question in at least 4 ways. You will give me the answer by doing this question in 4 ways. Try to do this question using NCR. Try to do this question using fundamental principle of counting. Try to do this question by exclusion principle. I mean by making total cases and excluding some of the cases. That ways you have to do this. Okay, Nigam, in these sessions we actually don't take difficult questions. In these sessions our basic purpose is to just make sure that you understand the concept. तो ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्लासेस है और कॉन्सेप्ट के जस्ट बट डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं दे सकते. डिफिकल्ट क्वेश्चंस विल कम आफ्टर ए फ्यू टाइम. ठीक है, तो जब हम लोग एंड की तरफ जाएंगे ना एग्जाम के नजदीक 2-3 months बिफोर दैट, एट दैट टाइम विल स्टार्ट डिस्कसिंग क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस, बिकॉज दिस टाइम इट इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट फर्स्ट. So you all of you have to do this question. Whatever answer you get, please type it in the chat box or in the comment box जहां भी आप हैं. I'll definitely answer that question. और कम से कम 4 तरीके से कीजिएगा. This will actually improve your thoughts about this permutation and combination. ठीक है? So that's all from my side, guys. Thank you very much. And this is another CAT batch that we are starting for CAT 2022, right? So of course the name tells you that what is our target for this course. We want you to score 99 plus percentile, and therefore all the teachers also, they are 99 plus percentilers who would be teaching in this course. Or you can also take Gradeup super subscription. In super subscription basically
you get 24 months, 12 months, 3 months subscription in which you get access to all the MBA entrance examinations, courses and material and whatever we have. उस सब का आपको access मिल जाता है. And currently these are at these prices, and there is also an additional discount which is going on by using this code which is there. Okay. So in Gradeup Super, as I told you, you don't need to purchase any separate course. So it caters to all the CAT or non-CAT batches whichever are there, and you get access to all of them and all the material as well. So that's all from my side, guys. Thank you very much. This is the number that you have to call if there is any query. Deepak Gupta is saying, sir, CAT का result कब आता है? Result would be somewhere around in January first week or second week, Deepak. ठीक है? Exam would be in November end or December first week. Okay everyone, so that's all from my side. Thank you very much. Have a very good weekend. We'll start that new series from Monday on app. So be there. Let's meet there and talk about those puzzles. It will be a good session if we interact a lot, because logical puzzles are generally like that only, and this is good for improving our LRDI skills as well. Okay. Thank you guys. Thank you very much. Good night.